Hello everyone. The next part is modes of operation, block cipher, and modes of operation. Okay, there are several modes in which your block cipher will operate. It is electronic code book, then your block chaining. Third is cipher feedback, and the four with the output feedback. Okay, one by one we are going to see each and every mode. Okay. So there are different modes of operation of block cipher. These are the procedure rules for generating the cipher block. Uh, Block cipher processes the data blocks of fixed size. Usually, the size of message is larger than the block size. Hence, long message is divided into series of sequential message blocks. You know very well the whole message, whatever the number of bits having that particular message is distributed into smaller parts. In DES, it is considered as a 64-bit data. Okay, so long messages divided into sequential messages, and then we are going to operate a cipher block one at a time. Okay, one at a time we are going to perform the operation on that part. So first is in electronic ब्लॉक कोड या फिर हम लोग इसको अलग से नाम भी दे सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक मोड. ओके, सो here this is very simple mode in which whatever the data is distributed into a number of blocks is directly encrypted, and we are going to generate the ciphertext for the same. Okay, as the example is given, plain text. This is a text is distributed into four blocks, 1 2 3 4. Each and every block is encrypted, and resultant value is generated. That is a 64-bit. For example, 64-bit plain text is there, so 64-bit ciphertext is generated. Okay, so here encryption, the plain text is given to algorithm and the ciphertext is generated. For a decryption process, we take the ciphertext as it is and just decrypt it and convert that ciphertext into a plain text message. Okay, so this is a simple way where uh, it is a very simple way where you can directly apply your encryption decryption algorithm. So again over here, check this one. Plain text is given to you. We are going to apply the encryption procedure here and just generate the ciphertext. So P2, P3. So C1 and C2 are generating the over here, and they are transferring to the decryption side. C1 is assigned to decryption algorithm, C2 is assigned to decryption algorithm, and it will generate the P1 and P2 plain text for the same. So इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक जिसको हम लोग ECB मोड हम लोग इसमें बोलते हैं. इट इज़ अ वेरी सिंपल मोड. ओके, एंड नेक्स्ट इज अ साइफर ब्लॉक चेनिंग. ओके, साइफर ब्लॉक चेनिंग इसके लिए हम लोग थोड़ा इसमें डिटेल में जाएंगे. CBC, CBC is nothing but the cipher block chaining. This is a stronger mode of operation. डायग्राम से हम लोग इसको एक्सप्लेनेशन शुरू करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल दो तरीके से इसमें वर्क होगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन होगा. सीबीसी इंक्रिप्शन में क्या होगा, द फर्स्ट इनिशियलाइजेशन वेक्टर इज यूज्ड. ओके, विच इज़ अ रैंडम बिट स्ट्रिंग. जो इनिशियलाइजेशन वेक्टर मतलब क्या होगी, एक रैंडम नंबर हम लोग जनरेट करेंगे. जैसे कि हम लोग 56 बिट यूज़ करते थे डीएस में, 56 बिट का कोड हम लोग यूज़ करते थे. सो on a plain text, we are going to use this initialization vector and perform the XOR operation, and it will assign to encryption algorithm. Okay, so what we have to do, we have converting this plain text by using this initialization vector. We are performing the XOR operation over there. We are assigning them to encryption algorithm and just generate the ciphertext block for the plain text one. Now over here, this encrypted ciphertext is now work as an initialization vector for your plaintext 2. So it can get the feedback. जैसे कि यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, it forwarded the ciphertext. हमने बाहर तो निकाल दिया, but again it is used as an input to your plaintext 2, and it work as an initialization vector for the same, and just uh, perform the XOR operation on the same and generate the block 2. Again, this block 2 is assigned to block 3, encrypted, ciphertext is generated. This ciphertext is assigned to it, the plaintext XOR with the ciphertext, encrypt it, and then generate it.
तो मतलब क्या हो गया, जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था वो हमारे प्रीवियस साइफर टेक्स्ट के साथ उसने एक्सऑर कर दिया और उसको इनक्रिप्ट करने के बाद एक तीसरी वैल्यू हो गई। तो एक इंक्रिप्शन तो यहाँ पर हो रहा था, दूसरा, तीसरा, चौथा, there are four random encryption methodology is required for identify the decrypted or regular expression for the same. Okay, now how you are going to decrypt it? You are going to use the ciphertext one over here. Ciphertext आप लोगों को मिल गया है, you just decrypt it. आप लोगों को मिल गया है ये सिंपल, आप लोग इसको decrypt करेंगे. You just applying the initialization vector over here, so you can get the plain text one. So this ciphertext is again possible, pass it to the XOR operation over here. We are performing the XOR operation first and then encrypt. Now we are going to decrypt it first and then XOR operation is performed based on the ciphertext value given to it. Okay, so this is how your CBC work. CBC is work, and this procedure is called as a chaining. This procedure is called as a chaining procedure, and that is why it is named as a CBC block. जो भी होता है cipher block chaining mode. Cipher block chaining mode. So this is the second mode of operation over here. The third one is your cipher feedback. Okay, cipher feedback में क्या होगा? Each ciphertext block gets the feedback into encryption process in order to encrypt the next plain text. Operation कैसे काम करना है देखो. In present system, message block has a size s, so s is between the 1 to n number of bits. So CFB mode requires initialization vector as a initial random number required for their encryption. So load स्टेप्स देखिए कैसे होगी इसमें. लोड आईवी इनटू द टॉप रजिस्टर. सबसे पहले तो हम लोग आईवी को टॉप रजिस्टर में लोड कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे आ गया. ये इंक्रिप्शन करना है, वी हैव टू इंक्रिप्ट इट. देन टेक ओनली एस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट. यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एस नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट बिट आर यूज. देन वी आर गोइंग टू XOR, perform the XOR operation. See over here, we are going to perform the XOR operation by applying the uh, applying them with the plain text message and the block generated the ciphertext blocks. जो भी block to generate the ciphertext block generate करने के लिए हम लोग यहाँ पर key इसमें use करने वाले हैं. Okay, see, the key is generated over here. MSB bit is given to you. Plain text S और इसमें हम लोग encrypt करेंगे and will generate the value for the same. Okay, तो ये हमारा ciphertext यहाँ पर generate हो गया. Then feed this ciphertext block into top register by shifting already present data to left hand and continue the operation till the plain text blocks are processed. जो प्लेन टेक्स्ट नंबर ऑफ जितने भी होते जाएंगे वो परफॉर्म करते जाएंगे. क्या करेंगे, दिस साइफर टेक्स्ट इज प्रोवाइडेड टू योर दिस वन. यहाँ पे तो ये हम लोग क्या कर देंगे, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. जो साइफर टेक्स्ट आया है, जो पहला ये प्लेन टेक्स्ट हम लोगों ने यूज़ किया, इनिशियलाइजेशन जो होगा हमारा वेक्टर का, जो हम लोगों ने देखा आईवी, तो ये हमारा पहले असाइन हो जाएगा, कीज यूज हो जाएगी. ये एमएसबी बिट से हम लोग इसको इंक्रिप्ट करेंगे. जो साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा हम लोग फिर इसको इनिशियलाइजेशन वेक्टर को फिर लेफ्ट शिफ्ट हम लोग शिफ्ट कर देंगे. तो ये कब तक करना है, जब तक आपका प्लेन टेक्स्ट ब्लॉक खत्म नहीं हो जाते तब तक. ओके, एंड डिक्रिप्शन साइड पे आप लोगों को क्या करना है, जो फाइनल आप लोगों का इंक्रिप्शन साइफर टेक्स्ट मिलता है, वी हैव टू लेफ्ट शिफ्ट दैट साइफर टेक्स्ट, जनरेट द key value, use the key value for decryption process, just decrypt that message and the plain segments are given to you. Plain text segments are generated through the decryption algorithm. Okay, so last but not least, output feedback. Output feedback में कैसे होगा, it involve feeding of successive output block from underlying block cipher back to it. जो आप लोगों का ब्लॉक है ये पूरा का पूरा यहाँ पर XOR ऑपरेशन होने के पहले ही हम लोग क्या कर देंगे, इसको पहले लोड कर देंगे. इनिशियली लोडेड विद द आईवी. आईवी का जो हमारा आता है इसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट पहले प्रोवाइड कर देंगे. फर्स्ट राउंड ऑफ ऑपरेशन होने के बाद हम उसको पहले क्या करेंगे, हम लोग आउटपुट को जो जनरेट होने वाला है उसको एज इट इज डायरेक्टली असाइन कर देंगे. दिस feedback blocks provide string of bits to fit the encryption algorithm which act as a key stream generator as in case of CFB mode. The key stream generated is XORed with the plaintext box, and the OFB mode operation
requires an IV as the initial random bit output and IV is need not be secret. यहाँ पे IV की सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है. हम लोग सिर्फ क्या करने वाले हैं, जो आउटपुट जनरेट होने वाला है उसको XOR करने के पहले हम लोग उसको रिप्लेस कर देंगे और फिर यहाँ पर XOR ऑपरेशन होने के बाद जो हमारा जनरेट होगा, इट इज़ नथिंग बट योर आउटपुट सेगमेंट. So these are the various modes of operation